A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your political science teacher. So today we are going to discuss our next topic of your chapter rights, and that is human declaration. There is a small box given in your NCRT textbook. So in this mm, box, what it is written about universal declaration of human rights, which is adopted and proclaimed by the United Nations. So on 10th December 1948, okay, what is the date? 10th December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. 10th December 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया. And following this historic act, the Assembly called upon all member countries to publicize the text of the declaration. Okay? And what they said, to cause it to be the disseminated, displayed, read, and expounded principally in schools and other educational institutions without distinctions based on the political status of countries or territories. In this declaration, what they said, we have to disseminate, display and read the expounded कि हमें schools में, educational institutions में इस universal declaration को जो भी हम spread कर रहे हैं for the human rights, ठीक है, whatever we are disseminated, whatever the action we are doing for the faith of with the faith of spreading something for the human rights, ठीक है, इसको स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या होना चाहिए, रीड किया जाना चाहिए, डिस्प्ले किया जाना चाहिए, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस किसी भी कंट्री का या टेरिटरी का उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. So preamble, as you all know what is preamble, it is an introductory or preface of the constitution, in which all everything which is mentioned elaborately in the constitution is given in that short preamble. Okay, as you all know, we also have India also have a preamble just like that. So whereas recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Okay, preamble में क्या है, हम क्या बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी ऑल हैव सम डिग्निटी, ठीक है, हमारे पास इक्वल और ऐसे राइट्स हैं जो हमसे छीने नहीं जा सकते, ठीक है, इनएलिएनेबल राइट्स, ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसे राइट्स जो हमसे ले नहीं सकते, नोबडी कैन टेकन अवे फ्रॉम अस. So all members of the human family is the foundation. जितने भी human beings हैं वो क्या है, foundation is the foundation of freedom. सबके पास freedom, justice और peace in the world. Freedom के साथ, justice के साथ और peace के साथ रहने का पूरा अधिकार है. Whereas disregard and contempt of human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Now, if disregard या फिर अगर हमने कोई disrespect, human rights को disrespect किया है, कभी भी किया है, तो उसका रिजल्ट क्या रहा है, ह्यूमन बींग्स जो है, जो आप बोल सकते हो मैनकाइंड जो है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके बार्बरस एक्ट्स और यू कैन से क्रूएल एक्ट्स दिखने को मिले हैं. एंड सो द एडवेंट ऑफ अ वर्ड इन विच ह्यूमन बींग शैल एंजॉय, एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो है क्या एंजॉय करे, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अपने बिलीव्स को, अपने कि वो डर के बिना वो जी सके, ठीक है, जो उसे चाहिए एक डिग्निटी के साथ रहने के लिए, एक नॉर्मल वर्ल्ड में डिग्निटी के साथ रहने के लिए उसके जो भी बेसिक नीड्स हैं
वो फुलफिल होने चाहिए, और यही सबसे बड़ा एस्पिरेशन रहा है कॉमन पीपल का। Next, where it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against the tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. ठीक है, और जब भी इसकी जरूरत पड़ी है कि कि कभी इफ मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड टू हैव रिकोर्स, कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा माना जाए कि एज अ लास्ट रिसोर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू रिबेलियन अगेंस्ट टेरनी, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस है, ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, कुछ ऐसे गलत बर्ताव हो रहा है हमारे साथ, तो वो रिबेल होते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम रूल ऑफ लॉ से क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। Next, whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, जब भी जरूरत पड़े हमें friendly relations रखने चाहिए दूसरे nations के साथ। Whereas the peoples, ये सारी की सारी चीजें बेटा एक प्रियम्बल में मेंशन होती है, मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रियम्बल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव दीज थिंग्स। Whereas the people of the United Nations have in the charter reformed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, and in the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस के जो लोग हैं उन्होंने अपने चार्टर में, ठीक है, ऐसा रिफॉर्म किया, उनका जो फेथ है कि हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उनमें उन्होंने उसमें फेथ दिखाया, डिग्निटी, मैन एंड वुमेन में इक्वालिटी, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस उनकी क्या हो, प्रमोट हो, ठीक है, और उनकी जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ जो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टाइल है, वो भी जैसे जैसे जितनी भी फ्रीडम मिले उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टैंडर्ड, उनके जो लाइफ के स्टैंडर्ड्स है वो भी क्या हो, बेटर होते रहे। Whereas member states have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observation of human rights and fundamental freedoms. ठीक है, जो member states हैं उन्होंने क्या pledge लिया, to achieve themselves to achieve, कि वो यूनाइटेड नेशंस के साथ कॉपरेशन रखेंगे, यूनिवर्सल रेस्पेक्ट का, ठीक है, वी ऑल हैव ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, तो इसका प्रमोशन करेंगे जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो, उन्होंने इस चीज की प्लेज ली। Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, और जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे कुछ बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स जो है हमारी लाइफ में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इस प्लेज का क्या था, रियलाइजेशन था, एक कॉन्क्लूजन था। So now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member states themselves and among the people of territories under their jurisdiction. So class, this in this paragraph basically universal declaration जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया, इसमें ये ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम, इक्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स और नेशनली और इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स को और ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम को, उनके पीस के लिए क्या उनके पीस के लिए राइट्स को क्या करने लगे, वो उन्होंने प्लेज ली कि वी विल प्रमोट इट। सो दिस इज all about mention in this paragraph, and India is also the member country of this Universal Declaration of Human Rights. Okay,
So class, this is all about today. Please prepare your slogans and send it to me as soon as possible, which I have given to you. Okay, thank you for joining the class, everybody. Please take care of yourself. Bye bye.